वालेकुम अस्सलाम। Assalamu alaikum. Today on 17th June 2021, I'm starting lecture number 2 for week number 12, and today we will learn marginal probability distribution / density functions, independence of random variables, conditional probability distribution function, and covariance and correlation coefficient of discrete and continuous random variables. So let us start from the first slide. Students, can you see the slide? Yes, sir. Okay. So how can we calculate marginal probability density function? Whenever we are given joint probability density function f of xy, we can always integrate this joint probability density function with respect to y and apply the limits of y to get the marginal probability density function of x, that is f of x. यहाँ पर भी अगर ये ऑन करा लें तो आपको यहाँ पर भी नजर आएगा ऑन कैंपस इसको ऑन जी जी थोड़ा सा वेट करते हैं। ये मल्टीमीडिया ऑन नहीं था शायद जो ऑन कैंपस क्लास कर रहा, तो वो जरा मल्टीमीडिया ऑन हो जाए तो दोबारा शुरू करते हैं। तो बात उस वक्त तक ये हो रही थी कि देखिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करना बड़ा आसान काम है। एफ ऑफ एक्स वाई आपको दिया हुआ होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, वाई की आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स पता चल जाए। इसी तरह से आपको इसको मिटा भी देता ये डस्टर ये। इसी तरह से अगर आपको एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है और आपने एफ ऑफ वाई यानी वाई की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप एफ ऑफ एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद उसमें आप क्या करेंगे कि एक्स की लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आपको एफ ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ वाई मालूम हो जाएगा। तो ये चीज़ रिकॉल करें कि लास्ट क्लास में हमने ये एग्जांपल की थी जिसमें एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ था और आपने उसमें से एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई कैलकुलेट किया था, जिसमें से एक स्ट्रेट लाइन और एक जो है वो पैराबोला आ रही थी। तो अब हम इससे आगे चलेंगे और आगे क्या है कि इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स में हमें क्या फ़ायदा होता है? रिकॉल करें कि चैप्टर 2 में जब हमने ये कहा था कि अगर एक एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट्स ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो हमें फ़ायदा ये हो रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना आसान हो जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाती थी। अदरवाइज हम उसके लिए एक फार्मूला यूज करते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सिंपली प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाती थी। तो याद रखिए कि ये जो फार्मूला आपको सामने नजर आ रहा है ये एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के फार्मूले के एनालॉगस है। जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते थे वहां हम एफ ऑफ एक्स वाई लिखेंगे, जहां हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखते थे वहां एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, जहां हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते थे वहां हम एफ ऑफ वाई लिखेंगे। तो यहाँ पर उनकी मुराद क्या है कि अगर दो वेरिएबल्स एक्स और वाई आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज की प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो पता है चला कि इंडिपेंडेंस की वजह से वहां पर भी फायदा होता था चैप्टर 2 में, और यहाँ पर जब हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें फायदा ही हो रहा है कि अगर दो रैंडम वेरिएबल्स चाहे वो डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज की प्रोडक्ट के बराबर होगी। एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर होगी। ठीक है जी। तो अब अगर आपको एफ ऑफ एक्स वाई मालूम है और आपने एफ ऑफ वाई मालूम करना है तो आप एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स करेंगे तो आपको एफ ऑफ वाई मालूम हो जाएगी। और अगर आपको एफ ऑफ एक्स वाई मालूम है आपने एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है तो आप एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एफ ऑफ वाई करें, एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको एफ ऑफ एक्स वाई यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी मालूम नहीं है लेकिन आपको एफ ऑफ एक्स भी पता है और एफ ऑफ वाई भी पता है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और जॉइंट प्रोबेबिलिटी मालूम कर लें। लेकिन ये सारी सहूलतें या ये सारी फैसिलिटीज़ कब मिलेंगी? जब एक्स और वाई के बारे में ये मालूम हो कि वो आपस में इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं।
नेक्स्ट आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बिल्कुल उसी तरह चैप्टर 2 में एनालॉगस है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, जिस तरह से पिछले के बारे में मैंने कहा था कि ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट से एनालॉगस। रिकॉल करें कि चैप्टर 2 में जब आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था तो आप कहते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो अगर उस फॉर्मूले को और इस ये फॉर्मूला जो आपके पास स्लाइड में खुला हुआ है इसको देखें तो ये 100% रिजेम्बलेंस रखता है। वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b, यहाँ पर f ऑफ y/x, वहां पर न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, यहाँ पर न्यूमरेटर में ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जो वाकई इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है। वहां डिनोमिनेटर में क्योंकि b डिनोमिनेटर में था तो f प्रोबेबिलिटी ऑफ b होता था, यहाँ क्योंकि x डिनोमिनेटर में है तो f ऑफ x डिनोमिनेटर में आएगा। तो पता चला कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कोई नया फंक्शन नहीं है, बल्कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही की एक्सटेंशन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही फार्मूला है, बस वो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज था, ये इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर f ऑफ y/x है तो f ऑफ xy डिवाइडेड बाय f ऑफ x, और अगर f ऑफ x/y है तो f ऑफ xy डिवाइडेड बाय f ऑफ y। तो बहुत आसान है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई होगी, उससे आप f ऑफ x और f ऑफ y मालूम कर लेंगे। फिर अगर आपको f ऑफ y/x कहते हैं तो f ऑफ xy डिवाइडेड बाय f ऑफ x कर देंगे। अगर f ऑफ x/y करते हैं तो आपको f ऑफ xy डिवाइडेड बाय f ऑफ y करके आंसर मिल जाएगा। तो अब हम आते हैं एक प्रैक्टिकल सवाल। जी, ये तो नेचुरल डोमेन है ना, ये लिखा हुआ है कि जी f ऑफ xy यानी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और f ऑफ x है, उसका जो आप ले लेंगे तो अब ज़ाहिर है कि इस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का भी कोई एक डोमेन बतानी तो पड़ेगी कहाँ से कहाँ तक वैलिड है। तो जेनेरिक में वो -∞ से +∞ तक पूरी लिख देते हैं, लेकिन आपको पता है जब पर्टिकुलर सवाल आता है तो ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि किसी सवाल में पूरी की पूरी डोमेन दी हुई हो। तो यही हो रहा है। अब नेक्स्ट सवाल में अगर आप देखें तो f ऑफ xy उन्होंने आपको दिया हुआ है, जिसमें इन्फिनिटी यानी -∞ से इन्फिनिटी तक डोमेन नहीं दी हुई, बल्कि उन्होंने कहा है कि x हो सकता है 0 से 2 के दरमियान और y हो सकता है 0 से 1 के दरमियान, और अदरवाइज जो है वो f ऑफ xy यानी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो 0। तो अब अगर आपने इस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x/y मालूम करना है तो f ऑफ x/y के लिए आप क्या करेंगे, f ऑफ xy को रखेंगे न्यूमरेटर में और f ऑफ y को रखेंगे डिनोमिनेटर में। लेकिन इन्होंने तो हमें दिया हुआ है f ऑफ y तो उन्होंने हमें दिया नहीं है। तो f ऑफ y कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत आसान सी बात है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप देखिए ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 टाइम x प्लस 4y। तो x प्लस 4y को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आंसर आएगा, x² प्लस 4xy। तो x² प्लस 4xy में अगर x को 2 पुट कर दें तो 4² यानी 2 आ जाएगा, और 4xy में 2 पुट करें x की जगह तो 8y आ जाएगा, सॉरी 8x आ जाएगा। हाँ, x की जगह तो पुट करेंगे, सॉरी 8y आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 8y और ब्रैकेट के बाहर वही 1/6। तो ये आपके पास f ऑफ y इन टर्म्स ऑफ y मालूम हो गया। तो f ऑफ y को इन टर्म्स ऑफ y मालूम करने के लिए वही जो हम पिछले वीक में भी हमने ये चीज़ की थी कि हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, उसमें x की लिमिट्स पुट करेंगे तो f ऑफ y मालूम हो जाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि f ऑफ xy जो है वो x प्लस 4 टाइम 1/6 है और f ऑफ y जो है वो 2 प्लस 8y टाइम्स 1/6 है। उन्होंने सवाल में पूछा था कि f ऑफ x/y मालूम करें। तो f ऑफ x/y का मतलब f ऑफ xy डिवाइडेड बाय f ऑफ y। f ऑफ xy भी दिया हुआ था और f ऑफ y हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। तो f ऑफ xy यानी 1/6 टाइम x प्लस 4y को न्यूमरेटर में रखा, और f ऑफ y जो हमने कैलकुलेट किया था 1/6 टाइम 2 प्लस 8y वो हमने डिनोमिनेटर में रखा। 1/6 से 1/6 कैंसिल हो गया, और इस तरह से आपको f ऑफ x/y जो है वो x प्लस 4y अपॉन 8y प्लस 2 मिल गया। अब नेक्स्ट के, अब उन्होंने इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा गिवन दैट y इज 1/2 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अब उन्होंने इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर एक सवाल पूछ लिया कि आपको हम ये बता रहे हैं कि y 1/2 है,
क्या प्रोबेबिलिटी है कि x लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। तो याद रखिए सबसे पहले जो गिवन चीज है ना उसको पुट कर देते हैं एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन है हमारे पास x प्लस 4y अपॉन 8y प्लस 2, ठीक है, x प्लस 4y अपॉन 8y प्लस 2। तो आप क्या करें, अब y की जगह 1/2 पुट कर दें। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने x प्लस 4 y की जगह 1/2 पुट कर दिया। इसी तरह 8 y की जगह 1/2 पुट कर दिया प्लस 2। सेकेंड लास्ट लाइन की बात हो रही है, तो x प्लस 4 इंटू हाफ प्लस 8 इंटू हाफ प्लस 2। इस तरह से आपने एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई यानी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई को सिंप्लीफाई कर लिया, तो वो आ गया x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 6। तो सबसे पहले क्या हमने किया, हमने f ऑफ x स्लैश वाई में, क्योंकि y गिवन था तो y को पुट कर दिया। अब एक्सप्रेशन सिर्फ x का बच गया। सवाल में उन्होंने कहा था कि x को लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 है x, तो x 0 और 1 के दरमियान है, क्योंकि लोअर लिमिट तो वैसे ही डिसाइडेड है कि x सबसे कम 0 हो सकता है। अपर लिमिट इन्होंने डिसाइड कर दी कि x 1 से छोटा होना चाहिए। तो इस वजह से हम इस एक्सप्रेशन को जो हमने कैलकुलेट किया x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 6, इसको हम 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट कर लेंगे और इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। तो 1/6 टाइम x प्लस 2 को आपने 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर लिया और इस तरह से आपको फाइनल आंसर 5/12 मिल गया। तो आप आई होप कि ये बिल्कुल ही बच्चों वाली इंटीग्रेशन है, ये आपके लिए कोई मसला नहीं। आप माशाल्लाह कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का एक बहुत टफ सब्जेक्ट पास कर चुके हैं ए ग्रेड के साथ। तो अब यकीन करें सुबह के लेक्चर में एक बच्चे ने मुझसे शुरू में पूछ लिया, सर ये कैसे इंटीग्रेट होगा। यकीन करें मेरा बीपी हाई हो गया। मैंने कहा मैं आपको ये बताऊं चौथे सेमेस्टर में आगे एक्स कैसे इंटीग्रेट होता है। तो आप भी माशाल्लाह देखिए बैचलर के स्टूडेंट है, सवाल में भी वो स्टैंडर्ड रखे कि मुझे लगे कि बैचलर के स्टूडेंट है। मुझसे एक्स का इंटीग्रल पूछेंगे तो मैं आपको एक्स का इंटीग्रल बताऊंगा। फिर तो मुझे आपके पिछले सेमेस्टर पे डाउट होना शुरू हो जाएगा। गलत बात है ना, इम्तिहान होना चाहिए। तो खैर, तो इस तरह से ये सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और सवाल। और ये सवाल अगरचे कि आपको रेपिटेशन लग रहा है कि दोबारा से ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी दी हुई है, दोबारा से वो कहते हैं x की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मालूम करें, y की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मालूम करें, दोबारा से वो कहते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करें। तो लगता तो ये कि सवाल की रिपीटेशन होगी, एक ही चीज को दूसरी दफा पूछ लिया। असल में हो ये रहा है यहाँ पर वो आपकी तवज्जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ दिलाना चाह रहे हैं। वो क्या है कि इफ यू आर गिवन a joint probability density function f of x y and you integrate it with respect to y, so you write integral to dy, like in this question. If you want to calculate f of x, what you will write integral to dy. Now the answer of this integration is 2y. Now if we put limits 1 and 0 in this 2y, it will again become 2. So f of x will become 2. It's not required. Why? Because we want to calculate f of x in terms of x. So to calculate f of x in terms of x, what we will do? We will put the upper limit generically. So you can see that when they calculated f of x, they wrote integral 2 dy, while the upper limit is not 1, rather it is 1 minus x. From where this 1 minus x came? It came from an additional condition given in the question statement. If you can notice in the first row of f of x y, they have written x plus y less than equals to 1. It means y is 1 minus x. So from this inequality, they extracted another condition that we can put x equals to 1 minus y, or we can put y equals to 1 minus x. So for the upper limit of y, they used this inequality and they wrote the upper limit of y as 1 minus x. Hence, the integral 2 dy becomes 2y, and when we apply the upper limit, it becomes 2 into 1 minus x minus the lower limit is 0. So the answer remains the same. Hence, f of x is 2 times 1 minus x. Same is the case for f of y. If we integrate
integral 2 dx, we come up with an answer to x. Now if we apply the limit 0 and 1, we will get again another 2. But it's not required. We want to calculate f of y in terms of y. So to calculate f of y in terms of y, we will put the upper limit generically. And from where we will get this generic expression? From the additional inequality given in the question statement. Again, we will take x equals to 1 minus y. Now, if we integrate integral 2 dx, the answer is 2x. For the upper limit, we will put 1 minus y instead of x. So it will become 2 into 1 minus y minus 0. Hence, f of y will become 2 times 1 minus y. So we can easily calculate f of x and f of y from the given expression of joint probability density function. And afterwards, we can calculate f of x upon y. Or we can say the conditional probability density function f of x slash y. So how can we calculate f of x slash y? It's very simple. First of all, we will write the expression of f of xy in the numerator, and then we will divide it with f of y, because it is f of x slash y. F of x slash y means f of xy in the numerator and f of y in the denominator. So f of xy was 2. So here is a 2 in the numerator, while f of y was 2 times 1 minus y. So it is 2 times 1 minus 1 by 4 in the denominator. Actually, they basically skipped one step. They should have wrote 2 times 1 minus y in the denominator, and then they should apply the limits. But what they did, they directly applied the limits that f of xy is 2 and f of y is 2 times 1 minus quarter, because it was given in the question statement that y equals to quarter, that is 1 by 4. So in place of 2 times 1 minus y, they wrote 2 times 1 minus quarter, because it was given that y is quarter, that is 1 upon 4. So now if we integrate 2 times 2 divided by 2 times 1 minus 1 by 4. So 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. The 2 of numerator can be simplified with 2 of the denominator. So 3 by 4 in the denominator becomes 4 by 3 in the numerator. So we can write integral 4 by 3 dx. So obviously it will become 4 by 3 x. Now if we apply the limits from half to 1, so it will become 4 by 3 bracket open 1 minus half, that is 4 by 3 into half, that is 2 by 3. So this is all about conditional probability distribution function. If you want to calculate f of x slash y, you will calculate f of xy divided by f of y. If you want to calculate f of y slash x, you will calculate f of xy divided by f of x. And then you will put the given condition directly, and after substituting the given condition you will integrate. यहाँ पर देखिए गौरतलब बात क्या है कि y equals to 1 by 4 given था. इंटीग्रेशन पहले नहीं हुई, पहले y equals to 1 by 4 पुट करके y को एलिमिनेट ही कर दिया. ता वक्त के इंटीग्रल क्या बन गया, इंटीग्रल 4 by 3 dx बन गया. फिर उन्होंने x की लिमिट पुट की, और x की लिमिट कैसे डिसाइड हुई? सवाल में लिखा हुआ था कि x मस्ट बी ग्रेटर देन हाफ. तो अगर x मस्ट बी ग्रेटर देन हाफ है तो अपर लिमिट तो उसकी वैसे ही फिक्स थी 1. तो उन्होंने कहा x को हाफ से बड़ा होना चाहिए, और अपर लिमिट वाज फिक्स्ड 1. तो हमने क्या कर दिया, हमने हाफ से लेकर 1 तक इसको इंटीग्रेट कर दिया. तो ये भी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन था कि वी वर रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन फ्रॉम x इक्वल्स टू हाफ till x equals to 1. So we integrated the function from half to 1. So that was all about conditional probability distribution function or density function. Now coming to the last topic of today's lecture, that is the covariance and correlation coefficients. Recall that earlier in chapter 1, I told you how to calculate the measures of central tendency for a given data. How to calculate mean, the average of a given random variable, whether it is discrete or it is continuous, whether it is grouped or it is ungrouped.
So first of all, whenever we pick a data randomly, what we will do, we will calculate its central tendency. We will calculate its mean. Then in the second step, we will calculate the measures of spread in order to find out that this variable, what is the spread of this variable. For example, take the example of temperatures in Islamabad. If we know that the average temperature of Islamabad is 20 degrees Celsius and the standard deviation is 5 degrees Celsius, and we assume that the data is spreaded 3 standard deviation ahead of the mean or 3 standard deviations before mean. So we can say that 20 plus 3 times 5, that is 35 degrees Celsius, is the maximum temperature in Islamabad, and 20 minus 3 times 5, that is 5 degrees Celsius, is the minimum temperature of Islamabad. Now this is one variable, that is the temperature. Suppose temperature is represented by the random variable x. Now if we are interested in millimeters, in millimeters of Hg, what is the average rainfall in Islamabad? So we can say that this is a random variable. Why? So then what we will do, we will calculate its average in millimeters of Hg. Suppose we say that there is an average rainfall of 30 millimeters in Islamabad. Then we will calculate its standard deviation, and then we will again calculate the spread of this rainfall from the lowest millimeters of Hg to the highest millimeters of Hg. Now we have one random variable, which is x, representing the average temperature of Islamabad, and we have another variable, that is y, which is showing the average rainfall in Islamabad. Now why we need covariances? Now we will calculate the covariance of the two variables to make sure that whether this rainfall is related to the average temperature of Islamabad or not. So to find out whether the two random variables are correlated or not, we calculate the covariances and the correlation coefficients. This is the main or the root cause for calculating these two new parameters. If we calculate covariance, then what we will do, after the calculation of covariance, we will calculate the correlation coefficient. If the correlation coefficient comes up with a value of +1, we will say that x and y are strongly related with each other. If we calculate the correlation coefficient after calculating the covariance and it comes up with a -1 value, then it means that x and y are strongly related, but an increase in x results in a decrease in y. Now, if we calculate the covariance and then we calculate the correlation coefficient and it comes up with a value 0, then it means that x and y are not correlated. That is, the two variables are independent from each other. So this is the reason that we calculate covariance and correlation coefficients in statistical analysis. Because whenever we are interested in calculating or performing any research, we are always interested among the relationship between two variables or more than two variables. So you often have learned or heard from the statistical experts that they calculated correlation coefficient and they found they didn't found anything correlated, or they found something very important and they say that the variables are correlated with each other. So these are the calculations they do, they perform. So you are lucky that you can learn these calculations with me, because rare teachers in statistics have this type of clear and crystal clear knowledge of these different parameters. So I should suggest you to learn this lecture wholeheartedly, and please come up with some good exercise problems that you have done, and then discuss with me that what you found about those calculations and what was your results and how you interpreted your results. It is very important. So coming back to the topic covariance, how can we calculate covariance? It is very simple.
The first two slides are regarding the proof of covariance. So I shall not give you any proof in your final exam. Therefore, skipping these two slides and coming to the real uh, real advantage. This is the formula for covariance. Expectation of xy minus mean of x into mean of y. In the previous two slides, what were they explaining? That how can we calculate the covariance using repetitive summations and repetitive integrations or multiple integrations. So we are not interested in proof of or the evidence of the formula. Rather, we are more interested in calculating the covariances and analyzing the different correlations among different variables. Okay, so we are not interested in establishing simple formulas. No? It is a fact that this formula has been established by some mathematician that whenever you want to calculate covariance between two variables, whether they are discrete or continuous, you can always calculate the covariance using this formula. Okay, now most of the parameters in this formula we already know how to calculate. For example, mean of x, we know that for discrete random variable it is summation x into f of x. For continuous random variable, it is the integral of x into f of x dx. Similarly, mu y is mean of y. For discrete random variable, it is summation of y into f of y. For continuous random variable, it is integral of y into f of y dy. How can we calculate expectation of xy? For discrete random variable, we will multiply every x with the corresponding value of y and the corresponding joint probability, and then we will sum up all these products to get expectation of xy. Similarly, for continuous random variable, we will multiply xy with the joint probability density function, then we will multiple integrate it with respect to x and y, and the answer of this multiple integration will be expectation of xy. So let us start from the first example. Let me explain this slide. This is the formula for correlation coefficient. How can we calculate correlation coefficient? By simply calculating the covariance that is represented by rho xy and then dividing this covariance with the standard deviation, with the product of the standard deviations of x and y. So first of all, we will calculate the standard deviation of x, then we will calculate the standard deviation of y, then we will calculate the covariance, and then we will divide the covariance with the product of standard deviation of x and y respectively. And hence we will calculate the correlation coefficient represented by a Greek alphabet written in this slide. I don't know what's the name of this. Okay, looks like sigma. Okay, so now what is the conclusion? When you calculate the correlation coefficient, if it is positive one, then x and y are strongly correlated. An increase in x will result in an increase in y. While if you if you calculate correlation coefficient and it comes up with a value of -1, then again it is a strong relationship. It is a strongly correlated function of x and y, where an increase in x will result in a decrease in y. So if the correlation coefficient is 1, the correlation is high and it is a direct variation. That is, an increase in x will result in an increase in y. While if it is 0, then the correlation is low. That is, the two variables are not depending upon each other. If the correlation is -1, then an increase in x will result in a decrease in y because it is a strong relationship but an inverse relationship. An increase in x will result in a decrease in y. So these are the some conclusions that we that the statistical experts have drawn with their experience. So now coming up with our first example, that is, we are given a joint probability distribution function for two discrete random variables x and y, and they want us to calculate the covariance and the correlation coefficient of these two random variables.
So first of all, what we will do, we will calculate mean of x. That is expectation of x. So for calculating expectation of x, what we will do, we will write 2 into 0.45 plus 3 into 0.3 plus 4 into 0.25. And hence the sum of these three products will give us expectation of x, that is mean of x. Similarly, for calculating mean of y, what we will write? We will write 40 into 0.3 plus 50 into 0.3 plus 60 into 0.4. And then we will sum up all these three products, and the sum of these three products will give us expectation of y, that is mean of y. In the second step, we will calculate expectation of x square and expectation of y square. So for expectation of x square, we will write 2 square into 0.45 plus 3 square into 0.3 plus 4 square into 0.25. And the sum of these three products will give us expectation of x square. Similarly, for expectation of y square, we will write 40 square into 0.3 plus 50 square into 0.3 plus 60 square into 0.4. And the sum of these three products will give us expectation of y square. Now, after calculating these four parameters, that is expectation of x, expectation of y, expectation of x square, and expectation of y square, we will compute variance of x and variance of y. Variance of x is equals to expectation of x square minus expectation of x whole square. Variance of y is equals to expectation of y square minus expectation of y whole square. After calculating variance of x and variance of y, we will take the roots of these two values, and hence we will calculate standard deviation of x and standard deviation of y, which comprises the denominator of covariance formula. So we have everything for the denominator of covariance formula, because in the denominator of covariance formula, we need to calculate standard deviation of x and standard deviation of y. Now for the numerator, we require probability of, we require expectation of xy minus mean of x into mean of y. We have mean of x with us, we have mean of y with us, but we don't have expectation of xy. So how can we calculate expectation of xy? It's very simple. We will multiply every x with the corresponding value of y and the corresponding value of joint probability, and then we will add all these 9 products to get the expectation of xy. That is, we will write expectation of xy is equals to 2 multiplied by 40 multiplied by 0.0 plus 3 multiplied by 40 multiplied by 0.2 plus 4 multiplied by 40 multiplied by 0.1 plus 2 multiplied by 50 multiplied by 0.15 plus 3 multiplied by 50 multiplied by 0.1 plus 4 multiplied by 50 multiplied by 0.05 plus 2 multiplied by 60 multiplied by 0.3 plus 3 multiplied by 60 multiplied by 0.0 plus 4 multiplied by 60 multiplied by 0.1. Then we will add up all these 9 products and we will get expectation of xy. For your convenience, they have given every answer of this calculation in the next slide. That is the slide right in front of you. So in this slide, they have told you that when you will do these calculations, expectation of x will be equal to 2.8, expectation of x square will be equal to 8.5, variance of x will be 0.66, variance of y will be equal to 60, and then you will take the root of variance of x and variance of y in the denominator of covariance, correlation coefficient, and for covariance you will calculate expectation of xy minus expectation of x into expectation of y. So hence you calculated the correlation coefficient, that is covariance of xy divided by root of variance of x into variance of y, and you found that the correlation coefficient is minus 0.415, which represents that x and y are correlated inversely with each other. If you will increase x, there will be a decrease in y, but this relationship is not much stronger. Why? Because it is not equal to 1, not equals to minus 1. So it is in between minus 1 and 1. So it is not a very strong relationship, but it is an inverse relationship. Okay. So this was the second last
question of today's lecture. Now coming to the last question. Here you are given a joint probability density function, and all you need to do is to repeat the procedure for the continuous joint probability density function. Here obviously it is not a joint probability distribution function, it is not a table, rather it is a continuous random variable. So they have given you joint probability density function. First of all, you will extract f of x from it. How can you extract f of x? Simply by integrating the joint probability with respect to y. So if you integrate 10x square into y, you will get 10x square y square upon 2. So it will become 5x square y square. Now the upper limit of y is x. So 5x square y square, and the upper limit is x. So you will write 5x square into x square minus 5x square into 0. So it will give you 5x power 4. Hence you found out that f of x is 5x power 4. Now you have f of x with you. You will multiply it with x, and hence you will find and integrate to get expectation of x. How can we calculate expectation of x? By simply multiplying f of x with x and integrating for the given domain. So we multiplied f of x, that is 5x power 4, with x. So it became 5x power 5. And then we integrated it for the given domain 0 to 1. Similarly, we multiplied f of x with x square, and we integrated the product from 0 to 1 to get expectation of x square. Now using the formula expectation of x square minus expectation of x whole square, we calculated variance of x, and then we took the root of variance of x to calculate the standard deviation of x. Similarly, to calculate f of y, what you will do, you will integrate the joint probability density function, that is 10x square y with respect to x. Now your answer would be 10x cube upon 3 into y. 10x cube upon 3 into y. So you can take this 3 out. So 10 upon 3 times x cube is your answer of integration. Now you will put the limit of x that are from y to 1. Notice here the lower limit is generic, while the upper limit is particular. The answer of your integration is x cube. So when you will put the first limit, it will give you 1, because 1 cube is 1. Now you will write minus of formula, and then you will apply the lower limit in x. So if you put y in x cube, it will become y cube, and hence you will get 1 minus y cube times 10 upon 3y for f of y. Now obviously if you integrate f of y by multiplying y with it and integrating for the entire limit 0 to 1, you will get expectation of y. And if you integrate f of y by multiplying it with y squared and then integrating for the entire domain, that is 0 to 1, you will get expectation of y squared. And again, subtracting expectation of y whole square from expectation of y square, we will get variance of y, and then we will take the root of variance of y to get standard deviation of y. At the end, we did the same thing that we did in the discrete random variable, that is for expectation of xy. What we will do, we will multiply the joint probability density function with xy. So recall that joint probability density function was 10x square y. So if we multiply it with xy, so it will become 10x square into x into y into y. That is, it will become 10x cube y square. Now we will integrate this function with respect to x and y, and hence we will get expectation of xy. Now obviously covariance is expectation of xy minus expectation of x into expectation of y. So we will calculate covariance, it is 0.1323. Then we will calculate the correlation coefficient, and it is 0.4265, which means which means that again x and y are correlated with each other. An increase in x will result in
sorry, an increase in x will result in an increase in y, but this relationship is not much stronger because it is not equals to 1, rather it is 0.4265. So this is all about the measure of central tendency of the data, the measure of spread of the data, the variances of the data, and the covariances of the data, and the correlation coefficients of the data. याद रखें कि ये चीज़ें जिसको आती हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो बड़ी आसानी से आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ज़्यादा अर्न कर सकता है एक महीने में सिर्फ इन्हीं चीज़ों से। अगर उसके सामने एक प्रॉब्लम रखी जाए और वो उस प्रॉब्लम या उस डेटा को सामने रखते हुए ये बता सकता हो कि जी इस डेटा का एवरेज क्या है, इस डेटा का स्प्रेड क्या है, इस डेटा की वेरिएंस क्या है, और अगर इस डेटा को इस डेटा से कंपेयर करें तो इन दोनों की कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, और उसके बाद अगर वो सिर्फ एक काम कर सकता हो जो वैसे तो कानूनी कुदरत में मुदाखलत है, लेकिन क्या करें कि साइंसेस एविडेंसेस पे चलती हैं और कैलकुलेशंस पे चलती हैं। तो साइंस ये कहती है कि उसके बाद वो टाइम सीरीज जनरेट कर ले। पिछला डेटा उसके पास आ रहा है, उसने मीन कैलकुलेट कर ली इस्लामाबाद के टेम्परेचर की, फिर उसने ये भी हिसाब लगा लिया कि इस्लामाबाद का टेम्परेचर 5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक रहता है। फिर उसने ये हिसाब लगा लिया कि रेनफॉल का इसके साथ रिलेशनशिप ये है। अब वो टाइम सीरीज जनरेट करके ये बताएगा कि अगले 5 साल तक कितनी बारिश होगी, अगले 5 साल में टेम्परेचर कैसा रहेगा, टेम्परेचर में कितना इंक्रीज होगा। अब आप सोचें, ये है तो मुदाखलत अल्लाह के काम में। अल्लाह कुरान में कहता है कि बारिश कब होगी ये किसी को नहीं पता। अब इंसान ने टाइम सीरीज जनरेट कर ली है, टाइम सीरीज से जनरेट करने के बाद वो फोरकास्टिंग कर रहा है, गूगल भी बता रहा है शाम के वक्त बारिश होगी। ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, लेकिन याद रखिए कि अल्लाह ने बारिश होने का जो कहा है ना कि किसी को नहीं पता। देखिए, बारिश होने का तो कोई बता देगा, चलो तुक्के में ठीक भी हो गया। क्या आपको पता है कि वो बारिश आपके लिए अच्छी होगी या बुरी? क्या आपको पता है कि वो बारिश ज़्यादा होगी या कम? सवाल है। तो बारिश का सिर्फ हो जाने का पता होने का कोई फायदा नहीं है। तो बारिश आपके लिए कैसे होगी ये गैब का इल्म अल्लाह को ही पता है। तो फोरकास्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पीक है। कब? जब आप डिमांड एंड सप्लाई पता कर लें कि मुल्क को इस वक्त 20,000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आज से 10 साल बाद 35,000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो अब क्योंकि 35,000 की कैलकुलेशन उसने कैसे की? फोरकास्टिंग से। फोरकास्टिंग कैसे की? कि उसने प्रीवियस डेटा को देखते हुए एक टाइम सीरीज जनरेट कर ली कि एज एन एवरेज एक साल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है, तो 15 साल बाद इतनी बिजली चाहिए होगी। वेस्ट क्या करता है? प्लांट्स लगाना शुरू कर देता है। पाकिस्तान क्या करता है? कुछ नहीं करता। 35 पर यानी जब 15 साल गुजर जाते हैं तो वो जब होता है ना कि लोड शेडिंग 18 घंटे शुरू करती है, वे प्लांट बनाना शुरू कर देते हैं। 5 साल 6 साल में लोड शेडिंग कम होते होते जब तक प्लांट बनता है 6-7 साल में प्लांट बन जाते हैं। लोड शेडिंग कम होती है, 6-7 साल अच्छे गुजरते हैं, पता चलता है फिर डिमांड बढ़ गई। वेस्ट में क्या हो रहा है? वेस्ट में ये हो रहा है कि वो प्लांट 20 साल पहले शुरू कर रहे हैं, उन्हें पता 15 साल बाद बिजली कितनी चाहिए हो। हाँ, चंदा मांगे होते, चंदा भी खा जाते हैं हमारा। लेकिन अगली मजे की बात क्या है, अगर आप जाए ना बाहर, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में जाए, आपको वापडा कह रहा है सोलर पैनल लगा लो भाई, मैं सोलर पैनल खुद दूंगा, मैं आपको इन्वर्टर खुद दूंगा, मेरा बंदा आके लगाएगा, 10 दिन बाद 20 दिन बाद पीरियोडिकली आके चेक भी किया करेगा सोलर पैनल ठीक चल रहा है, बस अब लगा लो। अब ये क्या है? ये कि उन्होंने कैलकुलेशन की हुई है। मुझे एक दफा किसी बड़े ने कहा था भेड़िया कि आप बनिए की तरह कैलकुलेशन करते हैं। अरे मेरे भाई, अगर मैं बनिए की तरह कैलकुलेशन ना करूं तो मुझे इंजीनियर ही नहीं होना चाहिए। मैं अगर कैलकुलेशन ना जानता हूं तो मेरा फायदा, इंजीनियर का काम कैलकुलेशन करना है, वो भी अगर कैलकुलेशन में माठा हो तो फायदा। तो बात ये है कि अब ये क्या चक्कर है कि वो घर आके पैनल दे रहे हैं आपको फ्री में, आप यहाँ पर पैनल खरीद के लगा रहे हैं, वहां पे वो घर जाके पैनल दे रहे हैं, फिर इन्वर्टर भी दे रहे हैं साइन वेव, फिर कहते हैं हम पीरियोडिकली आकर चेक भी करेंगे। क्या चक्कर है? उन्होंने भी बनी बनी कैलकुलेशन की हुई है कि अगर आबादी के 20% को भी हम पैनल देने में कामयाब हो गए तो जो 10 मिलियन या 10 बिलियन डॉलर का प्लांट हमने 10 साल बाद लगाना था, वो हमें 30 साल बाद लगाना पड़ेगा। तो उनकी कैलकुलेशन अभी भी ठीक है,
वो हमसे भी बड़े बनिए, लेकिन मसला इस कौम को बनिए ही चाहिए मेरे भाई, बनिए है नहीं इसके। मुसीबत ये कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, तुम कितने उल्लू मारोगे? रिकॉर्डेड, कोई मसला नहीं है मुझे। अनफॉर्चुनेटली नॉलेजेबल बंदे, जिन लोगों के पास नॉलेज है, उसको बेचारे को ऊपर ही कोई नहीं आने देते, और जो ऊपर बैठे उसको नॉलेज ही नहीं है, तो करवा लो काम, कुछ हो ही नहीं सकता। तो बात ये, टेंशन कोई नहीं है, आप अपने आप को ठीक रखिए। याद रखिए कि जिस बंदे का अपना नॉलेज ठीक है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसको हमेशा फायदा देता है। अल्लाह ने कुरान में भी कहा कि या माशर जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दी फनफुजू ला तनफुजून, ठीक है, इल्ला बिसुल्तान। ये ग्रोह जिन्नो इंस, अगर हो सके तो आसमान और जमीन के सितारों से बाहर निकल जाओ, और तुम कभी नहीं निकल सकते जब तक कि तुम्हारे पास नॉलेज ना हो। पीएचडी की जाली डिग्री नहीं, नॉलेज। अल्लाह ने नहीं कहा था पीएचडी की जाली डिग्री करो, ठीक है ना, अल्लाह ने नॉलेज की बात की थी। नॉलेज के लिए डिग्री जरूरत नहीं है, डिग्री की मोहताज नहीं है नॉलेज। आपको नॉलेज होगा तो आपको घर आके लोग कहेंगे कि सर हमारा काम कर दो। नॉलेज नहीं होगा तो आप डिग्री लेकर भी ढूंढते रहेंगे नौकरी के पीछे, और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप सोच लें कि आप डिग्री लेके लोगों के पीछे घूमना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि लोग आपके पीछे घूमें। तो जनरल नॉलेज होगा तो लोग आपके पीछे घूमेंगे, और डिग्री होगी तो लोग, मतलब आप लोगों के पीछे घूमेंगे। मैं डिग्री के मुखालिफ नहीं हूँ, डिग्री भी होनी चाहिए, लेकिन डिग्री पे तवज्जो से ज्यादा नॉलेज पे तवज्जो होनी चाहिए। हमारे यहाँ सारी तवज्जो डिग्री पे, सर बस पास कर दें, बाकी हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो कुछ पढ़ने के लिए भी करें मेरे भाई। मेरा लेक्चर खत्म हो गया, अब ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते, लेकिन आप सबको ये एडवाइस है कि चीज़ों को सिर्फ टाइम पास के लिए ना सीखें, बल्कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग करें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये होती है कि ये चीज़ मैंने सीख ली है ना, इंशाल्लाह ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप लोग आज आए ना ऑन कैंपस, तो आपने देखा मैंने स्लाइड की तरफ कुछ देखा है? मैंने पूरे सेमेस्टर कोई स्लाइड नहीं देखी। मैंने पूरे सेमेस्टर आपको लेक्चर देते हुए किसी कैलकुलेशन पे स्लाइड की तरफ नहीं देखा। सिर्फ इसलिए देखा है कि कौन सी स्लाइड पढ़ाई जा रही है, कैलकुलेशन के लिए नहीं। आपको ये समझाने के लिए कि जिसके पास जनरल नॉलेज है ना, उसको मोहताजी ना किसी बुक की है, ना किसी स्लाइड की है। उसको ये चाहिए कि मेरे स्टूडेंट भी वैसे ही पढ़े जैसे मैंने पढ़ा। ठीक है, इस चीज़ की हमें तमन्ना है, ठीक है ना। तो बाकी अब ऑन कैंपस आएंगे तो आप में शौक बढ़ेगा ना, ठीक है ना। क्या बात है, मैंने लगा लिया वैक्सीन मेरे भाई। पहले मैं ये बंद कर दूं, ऑनलाइन बच्चों को छुट्टी दूं, फिर वैक्सीन पे बात करते हैं। चलो बच्चों, आपकी छुट्टी होगी ऑनलाइन।